अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातरहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमार्गं श्रीचैतन्येश्वरम्। Where's Rupa Vilas Prabhu? Rupa Vilas Kai. So, आज मंदिर अरेंजमेंट कर दिया, बंदोबस्त कर दिया संकीर्तन महोत्सव के लिए। पिछले हफ्ता गोपाल कृष्ण महाराज ने अनाउंस कर दिया तो मंथली संकीर्तन फेस्टिवल के बारे में, एक ही नहीं तो आज करेगा। मंथली संकीर्तन फेस्टिवल अलग अलग जगह में है। तो कोई पूछ सकते हैं हम लोग संकीर्तन करना है किसके लिए, क्यों? तो इसके बारे में आज थोड़ा बातचीत करूंगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा, ने लिखा उनके श्रीमद् भागवतम में 10th स्कंद अध्याय 2 टेक्स्ट नंबर 37 में आपके लिए पढ़ेगा। ये थोड़ा कम कर देना, हवा चाहता है। अनुवाद। Even while engaged in various activities, अनेक गतिविधियों में व्यस्त रहने पर भी devotees whose minds भक्त जिनका मन are completely absorbed in your lotus feet पूरी तरह से आपके चरण कमलों में लगा हुआ है and who constantly hear, और जो निरंतर श्रवण करते हैं, chant, और कीर्तन करते हैं, contemplate, और आपके बारे में चिंतन करते हैं, and cause others to remember और दूसरों को याद दिलाने में सहायता करते हैं। your transcendental names आपके नाम, दिव्य नाम and forms रूप are always on the transcendental platform, वे हमेशा दिव्य स्तर पर बने रहते हैं, and thus they can understand और इसीलिए वे समझ पाते हैं the Supreme Personality of Godhead. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को। So Srila Prabhupada mentions in the purport, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं the word kriyasu, meaning by manual labor or by work,
is important in this verse. Kriyasu is important in this verse. तो ये जो क्रियासु शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। It means by manual labor or by work. अपने मेहनत से या कार्य के द्वारा One should engage in practical service to the Lord. भगवान की कुछ व्यावहारिक सेवा में करना चाहिए। In our Krishna Consciousness movement, हमारे कृष्ण भावनात्मक आंदोलन में all our activities are concentrated upon distributing Krishna literature. हमारी सारी गतिविधियों का केंद्र है कृष्ण भावना का जो पुस्तकें हैं उनका प्रचार करना, ग्रंथों का वितरण करना। Literature means sahitya. साहित्यों का वितरण करना। This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। One may approach any person आप किसी भी व्यक्ति से मिल सकते हैं and induce him to read Krishna literature और उसे कृष्ण साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, so that in the future तो भविष्य में वो he may become a devotee. भविष्य में वो भी भक्त बन सकता है। Such activities are recommended in this verse. ऐसे क्रियाओं का इस श्लोक में समझाया गया है, बताया गया है। Kriyasu yach tvach charanarda vindayo. Such activities ऐसे कार्यकलाप will always remind the devotees हमेशा भक्तों को याद दिलाते हैं of the Lord's lotus feet भगवान के चरण कमलों का, by fully concentrating on distributing books for Krishna पूरी तरह से पुस्तक वितरण में जो ध्यान लगाते हैं, पूरा अपना ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं। one is fully absorbed in Krishna. वो पूरी तरह से कृष्ण में डूबा ही रहता है। This is samadhi. यही समाधि है। So Srila Prabhupada is very emphatically, very strongly recommending practical work. श्रील प्रभुपाद बड़े जोर देके बोलते हैं व्यावहारिक शब्द। And we see in the lives of the Goswamis in Vrindavan, they were also absorbed in practical work. और हम देखते हैं वृंदावन के गोस्वामी वो भी व्यावहारिक सेवा में बल देते हैं। They were performing kirtan वे कीर्तन करते हैं and they were writing books, और पुस्तकें लिखते हैं। practical work. व्यावहारिक सेवा। So, along with hearing, just like we're organizing classes and kathas, that's Shravanam, hearing. तो श्रवण तो हम करते हैं, जैसे कथा सुनते हैं और क्लासेस जैसे आप सुन रहे हैं, वो श्रवण। So just as the hearing is essential, the practical work is also essential. तो जिस तरह से श्रवण महत्वपूर्ण है, उसी तरह से व्यावहारिक सेवा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। So what is that practical work Srila Prabhupada is mentioning in the purport to this verse? तो व्यावहारिक सेवा क्या है, ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं आज के श्लोक में। And that is to distribute literatures. और सबसे उत्तम सेवा है ग्रंथों का वितरण। So why is Srila Prabhupada recommending distributing literature? तो प्रभुपाद ने साहित्यों का वितरण पर इतना जोर क्यों दिया? We see that certain devotees become confidential devotees of the Lord. Confidential means trusted devotees. हम देखते हैं कुछ भक्त भगवान के विश्वास पात्र होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। Like Haridas Thakur. जैसे श्री हरिदास ठाकुर।
Chaitanya Mahaprabhu's trusted devotee, Haridas Thakur. चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही विश्वसनीय भक्त हरिदास ठाकुर। Why Haridas Thakur was a trusted devotee of the Lord? क्यों हरिदास ठाकुर एक विश्वसनीय भक्त है? Because Haridas, he used to do two things. क्योंकि हरिदास जी दो चीजें करते हैं। Srila Prabhupada mentions, Mahaprabhu mentions about Haridas, that Haridas, he not only spoke nicely, but he acted very nicely. तो दो कार्य क्या थे? महाप्रभु बताते हैं कि मोहन अच्छा बोलते थे, अच्छा वो व्यवहार भी करते थे। Some devotees, they're speaking very nicely, but their behavior is not good. कुछ भक्तों का व्यवहार बोलते तो अच्छा है, लेकिन व्यवहार इतना अच्छा नहीं होता। And some devotees' behavior is very good, but they're not speaking. कुछ भक्त हैं जो व्यवहार अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ प्रचार नहीं करते, बोलते नहीं। But Chaitanya Mahaprabhu was very pleased with Haridas Thakur because he not only acted very nicely, but he also preached very nicely. लेकिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास जी को पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि ना वो सिर्फ बोलते हैं, प्रचार करते हैं, बल्कि जो प्रचार करते हैं उसको आचरण भी करते हैं। And what was that acting? What did Haridas Thakur do to please the Lord? What did Haridas do to please the Lord? तो हरिदास क्या कर सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए? What did he do? उन्होंने क्या किया ऐसा? So in one purport, in Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada describes about Haridas Thakur. तो एक तात्पर्य में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हरिदास ठाकुर के बारे में। The verse is, Haridas is telling Chaitanya Mahaprabhu, don't be in anxiety. तो श्लोक ऐसा है, हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं, आप चिंता मत करिए। Haridas is telling Mahaprabhu, don't be unhappy. हरिदास ठाकुर बोलते हैं, आप दुखी मत होइए महाप्रभु। Don't be unhappy to see that there are so many yavanas suffering in this world. इतने यवन दुखी हैं, इनको देखकर महाप्रभु आप दुखी मत होइए। So Srila Prabhupada describes in the purport. The words of Haridas are just befitting a devotee who has dedicated his life and soul to the service of the Lord. तो श्रीला हरिदास ठाकुर की जो वचन है, जो बता रहे हैं, वो एक आदर्श भक्त जिसने अपना जीवन भगवान की सेवा के लिए दे दिया है, उनके वचन है। When the Lord is unhappy because of the condition of the fallen souls, जब भगवान जीवों की पतित स्थिति को देखकर दुखी होते हैं, the devotee consoles him by saying, भक्त भगवान को सांत्वना देते हैं यह कहकर, My dear Lord, do not be in anxiety. हे मेरे भगवान, कृपया आप चिंतित ना हो। This is service. यही सेवा है। Everyone should adopt the cause of Sri Chaitanya Mahaprabhu हम सभी को चैतन्य महाप्रभु का जो इच्छा है उसको अपनाना चाहिए, to try to relieve him from the anxiety he feels. और उनका जो चिंता है, उनको जो कष्ट है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। This is actually service to the Lord. यही वास्तविक सेवा है भगवान की। One who tries to relieve Sri Chaitanya Mahaprabhu's anxiety for the fallen souls जो महाप्रभु की दुखमय स्थिति है, पतित जीवों को देखकर दूर करने का प्रयास करता है, is certainly a most dear and confidential devotee of the Lord. वह निश्चित ही भगवान का बड़ा प्रिय और विश्वसनीय भक्त है।
So, if one wants to become dear to the Lord, if one wants to become a trusted devotee of the Lord, तो यदि किसी को भगवान का बड़ा प्रिय बनना है या यदि उसे भगवान का विश्वसनीय भक्त बनना है, सेवक बनना है, then a devotee should try his best to spread the Sankirtan movement. तो भक्त को प्रयास करना चाहिए संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए. And what is the best method for spreading the Sankirtan movement? और संकीर्तन आंदोलन को फैलाने का क्या सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तम तरीका. It's by distributing Srila Prabhupada's books. श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करना. So, Srila Prabhupada is recommending practical work. तो श्रील प्रभुपाद व्यवहारिक सेवा पर बल दे रहे हैं. What is that practical work? Distribute books. वो व्यवहारिक सेवा है, पुस्तकों का वितरण करना. He's saying if you want to become confidential devotee of the Lord, trusted devotee of the Lord, then distribute books. श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर आपको भगवान का प्रिय बनना है, उनका विश्वसनीय सेवक बनना है, तो भगवान की पुस्तकों का वितरण कीजिए. Just like if there's a good son, if the father has a good son, the son takes up the work of the father. जैसे पिता का कोई अच्छा पुत्र है, तो वो क्या करता है? अपने पिता का जिम्मेदारी लेता है. And he also is friendly with his brothers. और अपने जो भाई हैं, उनके प्रति भी वो मित्रता रखता है. Not that, if the father has so many sons and they're all fighting, then that creates a problem for the father. अगर पिता के सभी पुत्र आपस में झगड़ा करेंगे तो पिता उससे दुखी होगा. Today we see that. अभी हम वो देख सकते हैं. Before there was, joint families. पहले तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे. Now in Kali Yuga, joint families are very rare. कलयुग में अभी संयुक्त परिवार बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं. Right? सही है. As soon as the brothers get married, they begin fighting. जैसे ही भाइयों का शादी होता है, आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है. Right? सही. And there may be, teen kata, or panch kata, or das kata, right? So they want to divide. तो इस तरह से फिर बंटवारा करते हैं, झगड़ा करते हैं. My share. मेरा हिस्सा. So this creates anxiety for the father. पिता के लिए ये बड़ा चिंता का विषय है. Isn't it? Anxiety. Sons are fighting. तो पुत्रों को झगड़ा करते हुए देखकर पिता बड़ा चिंतित होगा. But a good son will not fight with his brothers. लेकिन जो सभ्य पुत्र है वो कभी अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करता है. So Krishna is the Supreme Father. तो कृष्ण भगवान सबके पिता है. And he wants us to cooperate with all of his angsas, living entities, that we're all our brothers. और वे चाहते हैं जितने उनके संतान हैं, जितने जीव हैं, सबसे हम भाईचारा करें, सबसे प्रेम करें. Right? And the father is interested for the welfare of all his children. जैसे पिता का इच्छा होता है उसके सभी पुत्र का भला हो. So a good son will see the interest of the father. तो जो सभ्य पुत्र है, अच्छा पुत्र है, वो पिता की इच्छा पूरी करने का प्रयास करता है. So if we are to be the good son तो अगर आप अच्छे पुत्र बनना चाहते हैं of the Supreme Lord, भगवान के,
then we should see how to bring the conditioned souls back to the sanity. तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे सारे जीव भगवान की ओर आ सके. Right now, all the conditioned souls, they are mad after sense gratification. तो अभी के समय जितने जीव हैं सभी इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल हैं. And for sense gratification, they do all kinds of sinful acts. और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सारे पाप भी करते हैं. All kinds of corruption, सब तरह का भ्रष्टाचार, telling lies, झूठ बोलना, cheating. धोखा देना. This is the result of being mad after sense gratification. तो ये सब परिणाम है इंद्रिय तृप्ति के पीछे जो पागल हैं वही लोग ऐसा करते हैं. So if someone is to be the good son of the Supreme Lord, then he should try to bring all these people back to their sanity. तो अगर हमें भगवान के अच्छे पुत्र बनना है तो जितने जीव हैं सभी को भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए. So this is what it means to be the trusted, confidential devotee of the Lord. यही भगवान के प्रिय विश्वसनीय भक्त बनने का अर्थ है. That the devotee sees the Lord is an anxiety about the conditioned souls, and he tries to relieve the anxiety of the Supreme Lord. तो जो भक्त है वो देखते हैं कि भगवान की चिंता को दूर करें और उसके लिए वो प्रयास भी करते हैं सभी जीवों को भगवान से जोड़कर. Dhruva Maharaj in Srimad Bhagavatam, 4th canto, 11th verse, 11th chapter, 14th verse says that anyone, any devotee who can satisfy the Supreme Lord, that devotee immediately becomes liberated from the material conditions. तो प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि जो भक्त भगवान को प्रसन्न कर देता है वो तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है. We see so many examples of the devotees of the Lord working very hard for the satisfaction of Krishna. हम देखते हैं कि कई भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करते हैं. Just like in the life of Madhavendra Puri, he found the Gopal Didi and he installed the Gopal Didi on Govardhan Hill. जैसे श्री माधवेंद्र पुरी के जीवन में हम देखते हैं उन्होंने गोपाल विग्रह को ढूंढा और फिर उनका स्थापना किया. So after installing the Gopal Didi on Govardhan Hill, because it was very hot, the Lord requested that you please bring me some sandalwood. तो जब स्थापना हो गया गोपाल विग्रह का तो भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप मेरे लिए चंदन लेकर आओ क्योंकि वो गर्मी का अनुभव कर रहे थे. So that sandalwood was available far away in Bengal. तो वो चंदन कई मील दूर बंगाल से उनको लाना था. So Madhavendra Puri, he left the deity worship in the hands of Brahmin devotees and he went to Bengal to bring the sandalwood. वो चंदन लाने के लिए बंगाल गए और जो विग्रह का सेवा है वो ब्राह्मणों को दिया. And on the way, he visited Ramuna. और बीच में रमुना में रुके. And there he had the darshan of Gopinath. और वहाँ उन्हें श्री गोपीनाथ भगवान के दर्शन हुए. And there was a famous preparation of kheer that was made every day for Gopinath. और एक स्पेशल खीर भगवान को लगाई जाती थी गोपीनाथ जी को.
when the pujari was bringing the kheer for offering bhog, Madhavendu Puri saw the kheer and thought, oh, I would like to taste that so I could offer it to Gopal. और जब माधवेंद्र पुरी ने देखा कि पुजारी भगवान को भोगा लगाने के लिए खीर लेकर जा रहा है, तो माधवेंद्र पुरी के मन में इच्छा हुआ, आज ये खीर मैं कर सकूं ताकि मैं अपने गोपाल के लिए भोग लगा सकूं। Immediately, Madhavendu Puri considered that he committed an aparad by wanting to taste the kheer before the bhog was offered. तो लेकिन तुरंत माधवेंद्र पुरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा सोचकर गलती किया है, भगवान को भोग लगे बिना मैंने उसे टेस्ट करने का इसको रख दिया। So he left the temple and he was very ashamed. और मंदिर छोड़कर वो शर्म के मारे मंदिर छोड़कर बाहर चले गए। And he went and he chanted the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. और फिर बाहर जाकर हरे कृष्ण का जप करते थे। So that evening, the pujari, he had a dream. Gopinath came to him and he said, you go into the bazaar and you find one devotee. His name's Madhavendu Puri. And I kept one pot of kheer for him behind my dress. You take that kheer and give him. तो उस रात जो पुजारी था गोपीनाथ जी, उसको स्वप्न में भगवान गोपीनाथ ने आदेश दिया कि जाओ मेरे भक्त माधवेंद्र पुरी को ढूंढ कर लाओ। मैंने उसके लिए एक कटोरी खीर अपने धोती के पीछे छुपा के रखा है। So in the morning, the pujari awoke and remembered the dream, and he went to the pujari room and he opened the door and he looked behind the deity, and sure, there was one matti of kheer. तो पुजारी सुबह उठता है और देखता है, भगवान का ऑर्डर में जाकर देखता है, तो भगवान ने धोती के पीछे सच में एक खीर का कटोरी छुपा के रखा है। So for this devotee, Madhavendu Puri, Gopinath had stolen one pot of kheer for him. तो ये जो भक्त है माधवेंद्र पुरी, उसके लिए भगवान ने खीर का कटोरी स्वयं छुपा के रखा है। So from that day forward, that deity became known as Kheer Chor Gopinath. और उस दिन के बाद भगवान का नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। So the pujari took the kheer and he went into the market and he began shouting, who's Madhavendu Puri? Gopinath has stolen one pot of kheer for you. और जो पुजारी थे वो खीर लेकर बाजार में आए और बोलने लगे, कौन है माधवेंद्र पुरी जिसके लिए भगवान ने एक कटोरा खीर चुराई है। Finally he met Madhavendu Puri and he gave him the pot of kheer. अंततः वो माधवेंद्र पुरी को खोजने में सफल हुए और उन्हें जो खीर का कटोरा था दे दिया। Receiving the kheer from Gopinath, Madhavendu Puri became filled with ecstasy. तो जो खीर का कटोरा प्राप्त हुआ, माधवेंद्र पुरी बड़े ही भाव विभोर हो गए। But he had his mission. He had to bring that sandalwood for Gopal. लेकिन अभी भी उनका लक्ष्य पूरा नहीं था, उनको चंदन लेकर आना था गोपाल के लिए। So he went to Bengal, he acquired that sandalwood and he was carrying it, very big piece of sandalwood on his back for Gopinath. तो वे बंगाल में वहाँ से चंदन लेकर आए और बहुत ही बड़े-बड़े लकड़ी के जो टुकड़े थे वो उठाकर वो लेकर आए। So at in those days there were many toll nakas and every place was collecting some amount for goods going one place to another place. उस समय जो अभी के समय देखते हैं टोल नाका, उस समय भी इसे टोल नाका था, तो कुछ आपको टैक्स भरना पड़ता था। So he had to convince all these
duty persons to release that sandwich. तो जो कर वसूल करने वाले अधिकारी थे उनको उन्होंने बात करके मना दिया किसी तरह. So with great difficulty, he brought that sandalwood paste to Ramuna. तो कष्टों का इस तरह से उन्होंने सामना करते हुए रेमुना में वो पहुंचे चंदन के साथ. But even though Madhavendra Puri was facing so many difficulties and had the heavy sandalwood he was carrying, because he was doing it for the pleasure of Gopal, his Gopal Diti, he was in extreme ecstasy. तो भले ही माधवेंद्र पुरी को चंदन लेकर आने में बड़ा कष्ट हुआ और आते समय उन्होंने स्वयं उठाया भी, लेकिन उसमें उनको आनंद अनुभव हो रहा था क्योंकि वो गोपाल विग्रह के लिए चंदन ला रहे थे. So when the devotee of the Lord works and struggles to satisfy the Lord, he experiences great ecstasy. और जब वक्त संघर्ष करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए तो उसे अपूर्व आनंद का प्राप्ति होता है. Once there was an opportunity for Srila Prabhupada to go to Russia. एक बार श्रील प्रभुपाद को मौका मिला रशिया देश में जाने का. And that time it was the mango season. Mango season. और उस समय आम का मौसम. So one devotee said, Srila Prabhupada, if you go to Russia now, it's very cold, also snow. Why don't you wait till the mango season is over and then go? तो एक वक्त ने प्रभुपाद को सुझाव दिया कि प्रभुपाद अभी बहुत ठंड है वहाँ पर, तो आप एक काम करिए जब आम का मौसम आएगा तब आप जाइए. And Srila Prabhupada replied, preaching in the snows of Russia is more sweet than any mango. प्रभुपाद ने कहा कि रशिया में ठंड के मौसम में प्रचार करना आम की मिठास से भी ज्यादा मीठा है. This is the mentality of the devotee of the Lord. ये भक्त का मानसिकता ऐसा होता है. Difficulties become a pleasure because they're for the Lord. कष्ट में भी उसको आनंद का अनुभव होता है क्योंकि भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं. So Srila Prabhupada, in his wisdom, understood that this distributing the books, it's not always easy. तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि प्रचार करना हमेशा आसान नहीं है. There's challenges. उसमें संघर्ष रहेगा, चुनौती रहेगी. Right? People are not interested very much in spiritual life. लोग अभी आध्यात्मिकता में रुचि नहीं लेते. And they're not interested in buying our books. और पुस्तक को खरीदने में भी रुचि नहीं लेते. But the devotee still makes the effort for the pleasure of Krishna, for the pleasure of the spiritual master, to try to please them by relieving their anxiety for the conditioned souls by giving them Krishna literature. लेकिन इन सब के बावजूद भक्त जो है प्रयास करता है गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कि बद्ध जीवों को सही ज्ञान देकर उनका भ्रम दूर कर सके. The six Goswamis in Vrindavan, they were taking so much trouble. षड गोस्वामी वृंदावन के इतने कष्ट उठाते थे. Studying the Vedic literatures and also summarizing all of them so that people will get the essence of the Vedic literature, bhakti. सभी वेदों का अध्ययन करके उसका सार प्रस्तुत किया जनता को ताकि लोगों को सार वस्तु मिल सके. And these same literatures of the six Goswamis, Srila Prabhupada has given them to us.
और यही सार वस्तु श्रील प्रभुपाद ने उनके ग्रंथों में रूप में हमको दी है। Like one of the most important books of Srila Rupa Goswami is the Bhakti Rasamrita Sindhu. जैसे अति महत्वपूर्ण पुस्तक है श्रील रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु। Srila Prabhupada summarized the Bhakti Rasamrita Sindhu as the nectar of devotion. श्रील प्रभुपाद ने उसका नाम दिया अंग्रेजी में नेक्टर ऑफ डिवोशन। So by this very important book of Rupa Goswami, it has all the Vedic references and systematic presentation of how to develop love of God. तो इस पुस्तक में व्यवस्थित रूप से बताया गया है कि कैसे हम भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। So in this way, we see that the 6 Goswamis were working for the benefit of the conditioned souls. Srila Prabhupada also working for the benefit of the conditioned souls. And if anyone wants to become a devotee, then they have to work for the benefit of the conditioned souls. तो जिस तरह से शरण गोस्वामियों ने वृंदावन के शरण गोस्वामियों ने जीवों के उद्धार के लिए कल्याण के लिए कार्य किया और जिस तरह से श्रील प्रभुपाद ने जीवों के कल्याण के लिए कार्य किया, तो हमें भी देखना चाहिए कि हम भी इस कार्य को आगे बढ़ाएं। One thing that's mentioned in the Nectar of Devotion by Srila Rupa Goswami, एक चीज जो श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताई है, if you want, just like there's different rasas or relationships one can have with the Lord. तो अलग-अलग रसों में भगवान से भक्ति की जा सकती है। One of those rasas is friendship. एक रस है साक्ष्य रस। So part of becoming the friend of the Lord तो भगवान का मित्र बनना is to become a well-wisher of the Lord. मतलब भगवान का शुभ चिंतक बनना। And you can become a well-wisher of the Lord by trying to present the message of the Lord. और भगवान का हम शुभ चिंतक बन सकते हैं तब जब हम भगवान का जो संदेश है उसको लोगों को बताएं। And to teach others how to render devotional service. और ये सिखाएं कि कैसे सेवा की जाए। So, giving the books of Srila Prabhupada to others is distributing the message of the Lord. तो प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरण करने का मतलब भगवान के संदेश को देना। And this is very pleasing. और ये बड़ा ही आनंद है, भगवान को बड़ा आनंद देता है। So Srila Prabhupada mentions in the 9th canto, chapter 4, text number 64, श्रील प्रभुपाद बताते हैं 9th canto 9वें स्कंद में how anyone who spreads the Sankirtan movement becomes a confidential devotee of the Lord. जो कोई भी संकीर्तन आंदोलन को फैलाने में मदद करता है वो भगवान का विश्वसनीय सेवक बन जाता है। The Supreme Personality of Godhead is self-sufficient. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं सक्षम है। But to enjoy his transcendental bliss, he requires the cooperation of his devotees. लेकिन जो दिव्य आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए भगवान को भक्तों की सहायता की जरूरत है। In Vrindavan, for example, जैसे वृंदावन में although Krishna is full in himself, भगवान अपने आप में परिपूर्ण है। he wants the cooperation of his devotees, उन्हें अपने भक्तों का सहायता की जरूरत पड़ती है। like the cowherd boys and the gopis, जैसे ग्वालपाल और गोपीगण, to increase his transcendental bliss. उनके जो दिव्य आनंद है उसको बढ़ाने के लिए। So Krishna is Atmaram, he's self-satisfied, he doesn't need anything, but to increase his bliss, he wants the cooperation of his devotees. भगवान वैसे तो आत्माराम है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आनंद को वृद्धि करने के लिए भगवान अपने विश्वसनीय भक्तों का
जरूरत देते हैं, उनका सहायता लेते हैं। Such devotees who can increase the bliss of the Supreme Personality of Godhead are His confidential devotees. तो ऐसे भक्त जो भगवान के आनंद को बढ़ा सकते हैं, उनके बड़े विश्वसनीय भक्त होते हैं। So Krishna, He enjoys with His devotees, and He wants to increase the number of devotees that He enjoys with. भगवान जब आनंद लेते हैं भक्तों के बीच में, तो भगवान चाहते हैं और भक्तों का संख्या बढ़े। And sometimes He comes to the material world just to convince the rebellious persons to become devotees. कई बार भगवान आते हैं इस संसार में ऐसे जो विरोधी तत्व हैं, जो विरोध करते हैं भगवान का, उनको शिक्षा देने के लिए कि भगवान की शरण में आए। So He wants the Lord's unlimited, so He wants to have unlimited devotees also. भगवान अनंत है, भगवान चाहते हैं कि भक्त भी अनंत बने। And any devotee that works, that does work, to try to satisfy the Lord's desire to increase his enjoyment unlimited with unlimited devotees, that devotee becomes very dear to the Lord. तो जो भक्तगण भगवान की ये इच्छा, कि भगवान के अनंत भक्त बने, ये इच्छा को जो पूरा करते हैं, वो भगवान के बड़े प्रिय और विश्वसनीय भक्त हैं। The Lord is filled with six opulences. भगवान षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। But at the same time, He wants to increase His ananda by increasing the number of devotees. लेकिन भगवान अपने आनंद को और बढ़ाना चाहते हैं। Because He doesn't feel bliss or He doesn't feel ananda without His devotees. क्योंकि भक्तों के बिना भगवान को आनंद भी प्राप्त नहीं होता है। Just like a very rich man, he may have many sons. जैसे कोई धनी व्यक्ति है, उसके कई पुत्र हैं। But if all the sons have left the home, लेकिन अगर सभी पुत्र घर छोड़ के चले जाएं, he doesn't feel happiness. तो उसे आनंद नहीं मिलेगा। There's so much opulence, सब ऐश्वर्य है, big house, बड़ा घर है, but sons are gone, लेकिन कोई पुत्र नहीं है, so he doesn't feel happiness. तो उसे आनंद का अनुभव नहीं होगा। So he wants to convince his sons, you come home. तो वो प्रयास करता है अपने पुत्रों को वापस बुलाने का घर में। And if a rich man has no sons, sometimes he adopts a son. और यदि किसी धनी व्यक्ति का कोई संतान नहीं होती, तो वो किसी को गोद दे देता है। Otherwise, where will all his wealth go? नहीं तो उसका जो सब धन है, वो किसके लिए? For what purpose he should have so much wealth? इतना धन कमाने का क्या फायदा? So sometimes he adopts a son. इसीलिए वो किसी बच्चे को गोद दे देता है। So this science of devotional service and the feelings of the Lord is known only to the devotees. तो ये जो विज्ञान है भगवान को पसंद करने का, ये सिर्फ भक्तों को पता होता है। Therefore, the devotees of the Lord are always busy, engaged in practical work for the pleasure of the Supreme Lord. इसीलिए जो भक्तगण हैं हमेशा व्यस्त रहते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। And in this way, they become friendly with the Lord. They develop friendship with the Lord. और इस तरह से भगवान से वो मित्रता का भाव प्राप्त कर सकते हैं। But in order to do this, there will be challenges. लेकिन इस कार्य में चुनौतियां आएंगी। Preaching work means there'll be difficulties. प्रचार मतलब चुनौतियां आएंगी। And there'll be some anxiety. और चिंताएं भी रहेंगी, कठिनाई रहेगी। But this anxiety is good. लेकिन ये जो चिंता है, ये अच्छी चिंता है। Because Srila Prabhupada explains that anxiety will come anyway. क्योंकि प्रभुपाद इसे बताते हैं कि चिंताएं तो आने ही वाली हैं। Because we have a material body, there will be anxiety. क्योंकि भौतिक शरीर मिला है तो चिंताएं तो आएंगी। So better you transfer that anxiety
for anxiety for Krishna. तो अच्छा तो ये होगा कि वो चिंताएं हम कृष्ण के लिए करें. If you transfer, like Srila Prabhupada said, I'm also in anxiety. जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा करते थे, मैं भी चिंतित रहता हूँ. I'm in anxiety how to protect the properties. मैं चिंतित हूँ कि कैसे जो जमीन है उसको बचाया जाए, अच्छा किया जाए. Anxiety how to present so that people will take to Krishna consciousness. मैं इसलिए चिंतित रहता हूँ कि कैसे कृष्ण भावना का विज्ञान लोगों को समझाया जाए ताकि वो उसको अपनाएं. We see that the 6 Goswamis, they made so many literatures. हम देखते हैं षड गोस्वामियों ने बहुत सारे साहित्य लिखे. And in those days there were no printing presses. और उस समय कोई प्रेस भी नहीं था. No books like this. छपी हुई पुस्तकें इस तरह से नहीं बनती थी. If you wanted, you had to write it on a palm leaf. अगर आपको पुस्तक चाहिए तो स्वयं लिखना पड़ता था. So palm leaf books were very rare. तो हफ्ते भर जो पुस्तकें हैं बहुत ही कम मिलती थी. And it took a lot of time to make one book. और एक पुस्तक बनाने में बहुत समय लगता था. But the 6 Goswamis of Vrindavan wrote hundreds of books. और षड गोस्वामी वृंदावन ने ऐसी 100 हजारों सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं. Now the devotees of Chaitanya Mahaprabhu, all of the associates of Chaitanya Mahaprabhu, so many, Mukunda and Pritivardhan and so many unlimited associates of Mahaprabhu, they were feeling separation from Mahaprabhu after he left. तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने धाम में वापस चले गए तो महाप्रभु जितने संगीगण हैं उन सब ने बहुत ही विरह का अनुभव किया महाप्रभु से. So the idea, the Jiva Goswami, he told Srinivasa Acharya, Narottam Das Thakur, you take the books and you go to Bengal and the devotees will read the books and their anxiety will become relieved. तो श्रील जीव गोस्वामी ने आदेश दिया नरोत्तम दास ठाकुर को कि आप जाइए बंगाल में कई ग्रंथों का वितरण कीजिए जिससे उनका जो विरह है, दुख है, वो कम हो. So they put all the books in a bullock cart and they went to Bengal. तो सारे ग्रंथों को उन्होंने बैलगाड़ी में रखा और बंगाल की ओर रवाना हुए. But somehow or another all those books were stolen. लेकिन किसी तरह वो सारी पुस्तकें चोरी हो गई. So you can just imagine the anxiety of Srinivasa Acharya, Narottam Das Thakur. तो हम सोच सकते हैं कि कितने चिंता हुई होगी श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर जी को. That all the books of the 6 Goswamis are now stolen. षड गोस्वामियों की सारी पुस्तकें चोरी हो चुकी हैं. But they saw this as a test and a challenge. लेकिन उन्होंने इसे चुनौती की तरह स्वीकार किया. And because they had great faith in the Lord, और क्योंकि उन्हें भगवान में पूर्ण विश्वास था, and they endeavored, they were able to get the books back. और उनके प्रयास से फिर उन्हें पुस्तकें वापस प्राप्त हुई. So although in spreading the Sankirtan movement, in distributing Srila Prabhupada's books, there will be challenge, there will be some anxiety. But if we persevere, if we use our intelligence and try to endeavor, then we will be successful to satisfy the Lord. प्रचार के समय चुनौतियां आएंगी, कठिनाई आएंगी, लेकिन अगर हम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनकी संतुष्टता के लिए कार्य करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होगी. So just to sum up, if you want to be a confidential, trusted devotee, then you have to take the Lord's headache, the Lord's anxiety on your head and try to deliver the conditioned souls. And what's the best way to deliver the conditioned souls? तो अंततः आप भगवान के विश्वसनीय पात्र बनना चाहते हैं, भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, सारे जीवों को उनकी सहायता करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? बोलिए.
Okay, I heard different things now. I'm confused. अलग-अलग आप लोग बोल रहे हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। I heard Sankirtan, I heard book distribution. कोई संकीर्तन बोल रहा है, कोई पुस्तक वितरण बोल रहा है। So there's no difference between Sankirtan and book distribution. संकीर्तन और पुस्तक वितरण में कोई अंतर नहीं है, एक ही। Why? क्यों ऐसा? What is Sankirtan? संकीर्तन क्या है? It's chanting the holy name of the Lord. भगवान के नाम का कीर्तन। The transcendental sound vibration goes out. ये दिव्य नाम बाहर जाएगा। And what are these books of Srila Prabhupada are Shabda Brahman. They're the transcendental sound vibration of the Lord. तो ये पुस्तक है श्रील प्रभुपाद की क्या है? ये शब्द ब्रह्म है। ये भी वही दिव्य ध्वनि है भगवान की। So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say that the mridanga of the Sankirtan party can be heard 100 meters. श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहा करते थे कि जो मृदंग बजता है संकीर्तन में, उसका आवाज कुछ मिनट दूर तक जा सकता है। But the printing press is the Brihat Mridanga because the transcendental sound vibration can be heard around the world. लेकिन जो ग्रंथ वितरण है वो बृहद मृदंग की तरह है जिसका ध्वनि पूरे विश्व में सुनाई देगा। When you do Sankirtan, chanting the holy name, people become purified. जब संकीर्तन करते हैं सब कोई शुद्ध होते हैं। In the same way, when they take a book and they bring it to their home, they're continuously getting purified because Narayan is residing in their home. उसी तरह से जब कोई पुस्तक अपने घर में रखता है, पढ़ता है, तो निरंतर वो शुद्धिकरण की क्रिया जारी रहती है क्योंकि नारायण भगवान स्वयं उपस्थित है। So in this way, Srila Prabhupada describes this Brihat Mridanga, this distribution of transcendental literatures. तो जिन ग्रंथों का वितरण की सेवा को प्रभुपाद कहा करते थे, बृहद मृदंग सेवा। So let's all say together, the best way to distribute Krishna consciousness, सबसे अच्छा कृष्ण भावना को बताने का क्या है? Srila Prabhupada's book distribution. I think the men were chanting, but the ladies kuch nahi suna. Saath mein hona chahiye. Srila Prabhupada's book distribution. Oh, that was better, ladies. Thank you. But I don't think they heard us upstairs. Let's try it again. Srila Prabhupada's book distribution. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna.